if H is bijective, then H inverse exists. Now let us check. First of all, F को पहले देख लेते हैं. तो डोमेन क्या है F का? See, F का डोमेन में है 1, 2, 3, 4. कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है element in the codomain is 10. Now see, here 1, 10 belongs to the function. तो 1 का इमेज क्या है 10, तो 1 इमेज 10, 2 का इमेज क्या है 10, 3 का इमेज भी 10, 4 का इमेज भी 10. It is many one function. So as it is many one function, that's why F inverse does not exist. So F inverse does not exist. तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट जी को देख लेते हैं. जी में आपका डोमेन क्या है 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. कोडोमेन में क्या क्या है? जी का कोडोमेन में है 1, 2, 3, 4. अभी यहाँ पे चेक कीजिए हर एक का इमेज. डोमेन में 5 है, 5 का इमेज क्या है 4, तो 5 का इमेज 4. 6,3 जी में है, 6 का इमेज क्या दिखाएगा? और 6 का इमेज क्या आ रहा है 3, तो 6 इमेज इज योर 3. यहाँ पे 7 का इमेज क्या दिखा रहा है 7,4, दैट इज इमेज ऑफ 7 इज 4, तो 7 related to 4. And 8,2, that means image of 8 is 2. So in case of this, no doubt it is your 1, 1. See 5, 4, 6, 3. It is not 1, 1. 5 and 7 having the same image 4. As 5 and 7 having the same image, आप देख लीजिए 5 का यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं. 5 का इमेज 4, 7 का इमेज 4. अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट सेम रिपीट हो रहा है, दैट इज इट इज मेनी वन. तो इट्स जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पर बोल दीजिए जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ यहाँ पर चेक कर लीजिए 2 का इमेज क्या है 2 का इमेज 7, then 3, 9, image of 3 is 9, 4, 11, image of 4 is 11, 5, 13, image of 5 is your 13. This is your domain and this is your codomain. See 5, 6, sorry 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13. So it is 1, 1 as well as on 2, means the function is bijective. So H inverse exists. You can say H inverse exists. Now let us take next question. Number 6. इसमें आपको पूछा गया है f function that's given to you, f domain -1 to 1 and codomains is set of real numbers. Functional formula fx is your x over x plus 2. It is asked to show that f is 1, 1. इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस, इससे ही रिलेटेड है. तो पहले हम काम करते हैं इसको 1, 1. तो हाउ टू शो सम फंक्शन इज 1, 1. फॉर दैट व्हाट्स द प्रोसीड्यूर और थॉट प्रोसेस क्या है? कोई भी फंक्शन अगर 1, 1 प्रूव करना है, यू डिक्लेयर fx1 इक्वल्स टू fx2 फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन. देन ट्राई टू शो दैट x1 इज इक्वल टू x2. दिस स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो. तो आई रिपीट, in order to prove some function is 1, 1 or injective, 1, 1 को भी injective बोलते हैं. तो if you are to show that some function is 1, 1 or injective, what way you can prove it? You declare fx1 equals to fx2, where x1, x2 are any elements in the domain of the function. Then try to show that x1 is also equal to x2. हम यही करने जा रहे हैं. Let f of x1 equal to f of x2 for any x1 x2 belongs to domain of the function. तो डोमेन आपका क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन क्लोज इंटरवल -1 to 1. नाउ आप फंक्शनल फॉर्मूला का हेल्प लीजिए. fx है तो x by x plus 2, तो इट विल बी x1 over x1 plus 2 and f of x2 इनपुट x2 देने से x2 by x plus 2, तो x2 by x2 plus 2. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. x1 इंटू x2 plus 2x1, x1 x2 plus 2x2 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो दिस टू कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट, क्या मिल गया आपको
x1 equal to x2. So whenever fx1 equals to fx2, then you can get x1 equal to x2. So here you can say f is 1 1. तो ये आपको मिल गया f is 1 1. Next, you have to find out inverse of the function. So to find inverse of the function, so first of all you should remember the function should be 1 1 as well as on 2. बट यहाँ पर क्या किया है उन लोगों ने, कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया है. If you replace the codomain by range, then obviously function becomes your what? Onto. Because when a function is onto, when range of the function and codomain are same, and in that case, in place of codomain, they are taking range of f. Already आपने दिखा दिया function is 1 1, और ये यहाँ पे कोडोमेन के जगह पे रेंज शिफ्ट कर दिया है. तो as it is range, definitely it becomes onto, and already we have proved it is 1 1. So the function is bijective. That's why inverse exists. Now, how to find inverse of the function? इसका thought process क्या है? To find inverse of the function, you take any element y in the codomain. So here let any y belongs to range of f, and codomain is the range of f. So any element y we have taken here. As it is 1 1 on 2, so there exists some x. कहाँ पे मिलेगा? डोमेन में. Belongs to domain of the function. डोमेन क्या है? -1, 1, क्लोज इंटरवल -1, 1. मैं ये रिपीट कर रहा हूँ आपको. लेटस हम कोई भी एलिमेंट इसका कोडोमेन में ले लेंगे. यहाँ पर कोडोमेन यानी रेंज और कोडोमेन सेम है, तो कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ले लीजिए. As it is on 2, so there exists some x in the domain for which fx must be equal to y. That's why you have written, so there exists some x in the domain such that for which fx must be equal to y. This is the procedure. इसके बाद सिंपल सा स्टेप्स है. आपको क्या करना है? fx का फॉर्मूला लगा दीजिए. fx क्या है? x over x plus 2 equals to what? y. After that, try to find out the value of x in terms of y. तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको. Let us solve it here. So for that, at first cross multiply. That will be your xy plus 2y equal to x. Implies that is your xy. Let us take in this side. 2y equal to x minus xy. Or you can say x minus xy equal to 2y. So x common, you will get 1 minus y is equal to twice of y. From here what you will get? X equal to twice of y over 1 minus y. आपको मिल गया f inverse. See, here fx is what? Y. As fx is y, so you can say x is what? F inverse of y. So here you can write f inverse of y equal to, this is the f inverse of y equal to twice y by 1 minus y. This is the inverse of it. One more thing, this f inverse, using what letter you are writing the formula for f inverse does not matter. कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर बुक में यहाँ पे x लगा दिया है. x, z, t, whatever you want you can use. जस्ट आपको फॉर्मूला का पैटर्न ही तो दिखाना है ना. तो आप क्या ऐसे भी रख सकते हैं, f इनवर्स x इक्वल्स टू, रूल आपको बताना है. तो f इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाटएवर इनपुट इज हियर ट्वाइस ऑफ दैट मच. तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहता हूँ तो आई विल राइट 2x by 1 minus x. यहाँ वर्ड भी रख सकते हैं. दिस इज योर f इनवर्स.